Okay, so now we are going to do a very important Indian philosopher, and that is Swami Vivekanand. Okay, इनके quotes आपका मैं compile करके भेज दूंगा. That will be given on the ethics group, और उसको आप maybe you can use it in your essay, in your ethics answers. So बहुत ही versatile quotes हैं इनके. So he is the father of Indian humanism. Let us see what is humanism. तो एक okay, human touch. He religion पे एक human touch he has provided, and he was of the opinion, that religion human से religion है, not religion से human है. बहुत बड़ी बात कही थी इन्होंने, that it is humans who have created the religion, and it is religion which should adjust to the needs of the human rather than vice versa. Are you understanding this point? How much how big this point is from the Indian context? From the Indian context, how big this point is? Yes, that suppose देखो, when was Swami Vivekanand? He was born in, I think, 1870, and he died in 1902 at the age of 32, right? 32 to 33, or he was 39. I'm not very sure, but he was from this era, right? Okay, okay, 1863. So 1863 till 1902, I think he lived till 39 years of age, right? 40 age, yes, correct. So he was alive till 40 years of age. So उस समय India was reeling under mysticism, false mysticism, occultism, superstition of the highest order. So as we have said, okay, as we have said that man is a product, okay, man is a product of his circumstances, and a man is a product of his time as well. So Vivekanand ji ke samay mein superstition, false mysticism, occultism was occultism was very prominent, very prevalent in Indian society. So he said, okay, that man should be at the center. Okay, man should be at the center of religion. Yes, basically tantra mantra, okay, फालतू की tantra mantra. So जो man है, उससे religion होना चाहिए, उसके needs के according religion को adapt करना चाहिए, rather than okay, man adapting himself according to religion. Okay, स्वामी विवेकानंद, इनका बिलीफ क्या था कि एथिक्स जो है, it is a reflection of society's cultural health at a given time. What is considered ethical, whatever is considered ethical, it points towards the cultural health. Okay, it points towards the cultural health. If killing your kid, killing your female kid in the womb is considered ethical in your society or at a particular time in a society, ठीक है, rules and rituals. Religion is basically rules and rituals, not gods. Okay, so then that points towards okay, a declining cultural health, a declining cultural health. Okay, Vivekanand also said, that man creates progressive cultural and moral ethos during the evolution phase. Okay, there is an evolution phase of human society. However, there comes a point when cultural development slows due to lack of new ideas. According to Swami Vivekanand, man जो है, man मतलब human being, he creates progressive cultural and moral ethos when he is evolving. But there is a slowdown. There is a what? Slowdown in this development of progressive ethos when there is a lack of new ideas. As a result, ethics is reduced to a shadow of its former glory. This is very important for your GS4.
Very important fodder for your GS4. Okay. According to Vivekanand, the solution to this lack of cultural development or a slowdown in cultural development, तो slowdown in cultural development कैसे हुआ? According to Vivekanand, how does the slowdown in cultural development happen? Due to lack of new ideas. Okay. According to Vivekanand, the solution to lack of cultural development lies in giving existing cultural a spiritual dimension. Okay. A spiritual dimension needs to be introduced. This spiritual dimension, it needs to be introduced to counter the what? The slowdown in cultural development. और कल्चरल डेवलपमेंट से क्या होगा? प्रोग्रेसिव ईथोस का फॉर्मेशन हो. Very important, ध्यान से समझो. That he said that by introducing the spiritual dimension, we can counteract, or we can counter the slowdown of cultural development that has happened due to lack of new ideas. And when we will counteract the slowdown of cultural development, when we will counteract this, there will be development of progressive ethos in the society. ठीक है, ये आपको, I think you are able to follow this. In addition with it, there is also a need to develop a new moral and ethical code for future generation. आने वाले जनरेशन के लिए एक न्यू मॉरल और एथिकल कोड को डेवलप करके जाना होगा आपको. ठीक है. सो दिस इज द बर्डन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, कि आने वाले जनरेशन के लिए एक नया मोरल एथिकल कोड विच विल बी रेलेवेंट फॉर देयर टाइम. रेलेवेंट फॉर देयर टाइम, इसका एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, क्या कोई ऐसा जजमेंट है या कोई ऐसा मूवमेंट है जो इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है, that in addition there is also a need to develop a new moral and ethical code for future generation? Puttu Swami judgment, very good. That's actually a IT, okay, information technology, because future में, yes, Nirgun is correct. LGBTQ मैं पूछना चाह रहा था. I will tell you something. You know, women का काम करना. If you would have seen the advertisement from 1950s, if you would have seen there was this advertisement of Born Vita. There was a advertisement of Born Vita. उसमें क्या बोला था? That there was a lady who she was dressed in fully Indian dress, and with a sari and bangles and everything, and it was a cartoon. And she was looking at her husband who was going to work, and she was also looking at her kid who was going with her husband, and the husband was dropping the kid. Apparently, the husband was dropping the kid while he was going to his work, and it was written in that, your husband goes to work. Hey lady, your husband goes to work. What are you giving him? Okay, so that he stays energetic throughout the day. It is your duty as a housewife, okay, it is your duty, okay, as a housewife, to care for your husband. Give him Born Vita so that he stays energetic. This was an advertisement from 1959. So आप बोलो, आज के जमाने में, in today's world, अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहेगा, तो will this not evoke outrage? Will this not evoke outrage? Yes. So आप देखो that working women, they were looked down upon. Working women, they were looked down upon in the 1950s. आज के डेट में जब शादी कराने जाते हैं, when you go for a marriage proposal, what do you check the first? That लड़की काम वाली है कि नहीं, मतलब काम वाली in the sense कि working है कि नहीं. Like जो लेडी है, you would say कि मुझे working
वर्किंग लेडी चाहिए शादी करने के लिए, दैट इज वेरी कॉमन, ओके, दैट इज वेरी कॉमन इन अर्बन 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 सोसाइटी, राइट? अबे मतलब इन द सेंस की वर्किंग विमेन चाहिए, ठीक है। आप पूछते हो कि वो कॉर्पोरेट वाले कॉर्पोरेट में ही चाहिए, ओके, वो आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो मुझे सॉफ्टवेयर वाले ही चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ मिथ, ओके। सो आप देखोगे तो एक बार में 1950s में जो आइडिया दैट विमेन, जो वर्किंग वुमेन है, दे यूज टू इवोक, ओके, दे यूज टू इवोक रिवोल्टिंग आइडियाज और रिवोल्टिंग, व्हाट डू यू कॉल दैट, रिवोल्टिंग आइडियाज और रिवोल्टिंग रिएक्शंस। वो सेम चीज आज के डेट में 2020 में नॉर्मलाइज हो गई है, ओके। ये 2020 में नॉर्मलाइज हो गई है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो, कैन यू टेल मी वन थिंग, आज के डेट में इन टुडेज वर्ल्ड, सपोज LGBTQIA+ this issue is being, is being debated upon, a good chunk of people are opposed to LGBTQIA marriage or legalizing LGBTQIA. But tell me, in 30 to 50 years, will this not will this not be a normal idea for your grandchildren or for your children? Yes or no? So जो यहाँ पर ओके, जो कैडबरी है, ओके, जो कैडबरी 1950s में बोल रहा था, हे हाउसवाइफ, व्हाट आर यू डूइंग टू गिव योर मैन, आज के डेट में वही सेम, ओके, वही सेम बॉर्नविटा वाली कंपनी, दे आर सेलिब्रेटिंग विमेन एट ऑफिस। जो कि 50-60 साल पहले, 50-60 इयर्स बिफोर, सेम कंपनी बोल रही थी, हे हाउसवाइफ, व्हाट यू आर डूइंग, ओके, टू गिव योर मैन। आज सेम 60 इयर्स लेटर दे आर सेलिब्रेटिंग विमेन एट वर्क प्लेस, ओके, ठीक है। तो उसी तरीके से 50-60 इयर्स लेटर जो चीजें आज हम अगेंस्ट हैं या उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आर ग्रैंड किड्स, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड दे आर, इट विल बी नॉर्मल फॉर देम, इट विल बी 100% नॉर्मल फॉर देम। यस, निरमा वॉशिंग पाउडर के एड्स अगर आप देखोगे तो वहां पर पहले क्या था कि एक औरत अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, ओके, वो साफ कर रही, कॉलर साफ नहीं हो रहे तो हस्बैंड दुखी हो गया एंड उससे बात करना बंद कर दिया, तो फिर कोई एक वॉशिंग पाउडर आया और वो मतलब, and you get the point, right? You get the point, but that has happened, what, that has stopped, okay, that has stopped। अब क्या दिखा रहे हैं, मेन को भी दिखा रहे हैं कि ओके, दे आर आल्सो वॉशिंग द क्लोथ्स एंड उनको आसान हो रहा है टू हेल्प देयर वाइव्स। एंड एट द सेम टाइम हियर फेयर एंड लवली इज अ वेरी गुड एग्जांपल। 20 years back, 20 years back, okay, there used to be a, a सांवली लड़की and there used to be a gori ladki, and the samli ladki was shown, okay, as someone having anxiety issues, someone having self respect issues, okay, someone having, self image issues, whereas the fair women, she was seen, having a confident aura, and then she gives the fair and lovely to this person, okay, to the samli ladki, and she also becomes fair। आज में इतना आउटरेज होगा, सेम थिंग, बिकॉज एक्चुअली में फेयर एंड लवली, दे हैव रीब्रांडेड देमसेल्फ, नाम ही चेंज कर दिया, प्लस they have started okay, hiring dusky models। विद इन 20 ईयर्स सोसाइटी में इतना चेंज आ गया। आप देखो तो जो विवेकानंद जी थे 200 years back, 150 years back, he had said that it is a burden on the present generation that we need to develop a new moral and ethical code for future generations। Yes, correct, GS is correct। ओके, द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर पहले इन्होंने क्या बोला था कि एक स्पिरिचुअल डिमेंशन देना पड़ेगा टू काउंटर द स्लो डाउन इन कल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ पर फिर बात कर रही है कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस, ओके, according to Vivekananda, require the country's social, economic and political reconstruction। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने।
especially in the present context, अभी आप देखोगे कि communal fault lines are deepening, especially in the run up to 2024 elections. Okay, so offering religion to a starving people when they ask for food is insulting. According to Vivekananda, that offering religion to a starving people when they ask for food is insulting. Teaching religious principle to a hungry man is an insult to his dignity. Okay, बहुत important ये है, quotes हैं that you can use in your essay and your GS1. Okay, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा. ओके, आपने सिमिलरली कहाँ एक और बोला गया है, मैस्लोज हायरार्की पढ़ा है आपने? हमने डिस्कस किया था मैस्लोज हायरार्की. यस, तो मैस्लोज हायरार्की भी यही बात सेम बोलता है दैट देयर इज अ पिरामिड और एट द बॉटम lies your animal needs, food, water, shelter, उसके बाद family, security. Okay, these, तो जैसे जैसे आपकी needs met होंगे, at the top lies your spiritual upliftment. तो अगर आपके animal needs, आपको खाना नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ा कोट है. Okay, this is something that is used by my guru as well, and he says कि भूखे पेट भजन ना हुए. अरे वाह, अरे देखो, सेम टाइम पे निकल गई बात. यस, अभी सो भूखे पेट भजन ना हुए. सो इसका मतलब क्या है कि जब आप आपके पेट में खाना नहीं है, ओके, ऑलराइट, आपके पेट में खाना नहीं है, तो यू कैन नॉट डू भजन. ओके, यू कैन नॉट सिंग इन द प्रेज ऑफ द गॉड. सो उसी तरीके से यहाँ पर ये बोल रहे हैं दैट इट इज इंसल्टिंग टू द डिग्निटी, ओके, of a hungry man if you offer him religion instead of food. Okay, now on human freedom, Vivekananda on human freedom, according to Vivekananda, freedom is a prerequisite for human development. जब तक आप freedom नहीं दोगे, तो यहाँ पर आप liberty का अगर क्वेश्चन आता है GS2 में लिबर्टी का, तो वहां पर विवेकानंद को भी कोट कर सकते हो दैट ही सेड, विवेकानंद आल्सो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट फ्रीडम इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, बट एट द सेम टाइम freedom does not imply the absence of barriers to social advancements or economic exploitation. तो ये क्या इनडायरेक्टली रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है? यस और नो? रिजर्वेशन या इनका कहना क्या कि फ्रीडम इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन फ्रीडम का होना does not imply the absence of barrier to social advancement or economic exploitation. तो इसका मतलब है, सपोज यूपीएससी है, आपने बोला that everyone can give UPSC, everyone can give UPSC, but at the same time आपको पता है कि some communities are at a disadvantage, they have been historical, okay, historical उनका केस रहा है that they have been historically backward in the economic, in the social sense. तो क्या अगर मैं बोल दूं that if I say कि यूपीएससी सबके लिए फ्री है, तो is it actually free? Is it actually free? Because social barriers exist for some people. So the selection of 100 IAS officers, अगर उसमें रिजर्वेशन नहीं है, तो they will be from a handful of privileged communities. Okay, handful of communities. Yes or no? So यहाँ पर इनका कहना क्या है कि फ्रीडम प्रीरेक्विजिट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए. फ्रीडम इज प्रीरेक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो फ्रीडम मिल गई है, इसका ये मतलब नहीं है that there is an absence of barrier to social advancement or economic exploitation. Okay, Swami Vivekananda vehemently advocated for progressive ideas while opposing escapist doctrines such as mysticism. Okay, so इनका कहना था कि प्रोग्रेसिव आइडियाज के पीछे भागो, ओके, डोंट गो फॉर एस्केपिस्ट डॉक्ट्रिन्स. ओके,
Don't go for escapist doctrines. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. This is coming, okay, this is coming from a person who is into astrology. Okay, I do astrology, I am a student of astrology. Okay, लेकिन I'll say कि astrology is escapism. Why? आप देखोगे, you say you go to an astrologer, okay, rather than working for UPSC civil services examination, uh, rather than doing test series, rather than studying for it, rather than doing your Lakshmikant, you go to an astrologer and the astrologer says, अरे यार तुम्हें तो बहुत सारे राज योग हैं, you have a lot of raj yogas and you will clear the UPSC civil services examination with a top rank, so you stop studying. Is it not an escapist? Then doesn't it mean कि वो escapist doctrine हो गया? आपने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेने के बजाय you use it for escapism. अब suppose you are a man, you have a wife, you have a kid, you have bills to pay, but what you are doing, आप 6 घंटे 6 hours you are doing puja, you are sitting at a place and you are doing some tantra sadhana. You have a wife, you have kids, and you have bills to pay, you have old parents. Is it not escapism? Is it not escapism? तो इसी के अगेंस्ट थे, इसी के अगेंस्ट थे. ओके, मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैक्सिमम जो लोग होते हैं, if you will see, they do a small puja, okay, especially labor class, they do a small puja, ठीक है, और वर्क पे निकल जाते हैं. they go on work and they work a lot. सुबह से शाम तक they collect their paycheck and they come back. Okay, so वो बंदा, okay, जो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, he is more spiritual, he is more, okay, he is more, he is a better party, okay, to the grace of God than a person जो कि अपना काम छोड़ के and he is taking refuge in mysticism, in occultism, in things like in all these things. Okay, so इनका कहना था that progressive ideas के पीछे भागो, work करो, okay, and he opposed escapist doctrines. इनका बहुत बढ़िया quote था, you can use this: arise, awake, and stop not. Arise, awake, arise, awake, and stop not until the goal is reached. Until the goal is reached. Okay, so this is a very relevant quote as a UPSC aspirant. Okay, सुबह में आप उठते हो तो rather than spending hours, okay, on escapist things like watching Netflix, watching Prime Video, watching YouTube, बकैती करने से better है that आपके जो daily targets हैं आप उनको पूरा कर लो. तो always remember, arise, awake, and stop not until your goals are reached. Okay, इनका ये भी कहना था कि occultism or mysticism, it destroyed the people, and this was actually true. Why it was true? Because आपने देखा बहुत सारे issues थे. Okay, forced sati, and rituals. Rituals से क्या problem है? That person who is poor, he was also being asked to invest a lot of money. He was also being asked to invest a lot of money in pointless rituals. Okay, so that's why, okay, Swami Vivekananda was against this whole thing. Vivekananda believed that man is the center of religion as he is the one who conceived it. यही चीज हमने बात की थी, that man, he is the center of religion as he is the one who conceived it. उसी ने बनाया है. Man has created religion to satisfy his spiritual and intellectual and curiosity and needs. So religion should adapt according to the needs of man rather than the other way around. Okay, he encouraged people to look for God in man. आप हर आदमी के अंदर गॉड देखो rather than going to specific places. Okay, हर आदमी के अंदर एक गॉड बसता है इनके अकॉर्डिंग.
Swami Vivekananda on ethics, the work of ethics is not the destruction of variance and establishment of sameness. ठीक है, but recognition of unity in spite of all these variations. Okay, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या ये बोल रहे हैं कि जो एथिक्स है इसका काम ये नहीं है कि सबको सेम बना दे. एथिक्स क्या है, एक सेट स्टैंडर्ड है. एथिक्स इज व्हाट, इट इज अ सेट स्टैंडर्ड. यस, ओके. तो एथिक्स जो सेट स्टैंडर्ड है, इट डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमनेस, बट रिकॉग्निशन ऑफ यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ऑल द वेरिएशंस. ओके, एक्चुअली में जो एथिक्स है, इट इज अ यूनाइटिंग फैक्टर. एथिक्स जो है, इट इज अ यूनाइटिंग फैक्टर रादर देन, ओके, आपको एक ऐसा चीज जो डिस्ट्रॉय कर रहा है वेरिएंस को. He sees the common population of India as the only hope for the nation's salvation as the elites are physically and morally exhausted. तो ये उस समय का था, 19th लेट 19th सेंचुरी इंडिया की ये बात कर रहे हैं. ओके. On education, Vivekananda summarizes the entire concept of education as the manifestation of divinity in man. Okay, again यहाँ पर वही बात रही कि man is the center of religion. Okay. He saw caste consciousness as a roadblock to India's development. जो caste consciousness है, it is a roadblock to India's development, and he was against the caste system. Okay, service to man is service to God. Correct. According to Vivekananda, casteism constricts and divides the noble bond of humanity. It is against. Okay, caste system is against humanity, according to विवेकानंद. तो ये आप GS1 सोसाइटी में ये पॉइंट लिख सकते हो. विवेकानंद promotes the notion that man must strive for the goal of good for all. Okay, और उसमें मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, टू अचीव द अल्टीमेट गोल, एंड दैट शुड बी मोर वर्दी देन द गोल इटसेल्फ. यहाँ पर क्या ये पॉइंट डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की तरफ इमैनुअल कांट की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, यस और नो? यस, ओके. emancipation of women, according to Vivekananda, one of the major reasons for deterioration of Indian society was the continued neglect of women and the masses. ठीक है. A country or a nation, according to Vivekananda, that does not respect women has never been great and will never be great in the future. This is a very good quote for your GS1 women issues and GS2 women and children issues. Okay, you can beautifully conclude your answers using this. Okay, आप अपने आंसर्स को ब्यूटीफुली कंक्लूड कर सकते हो. नेशनलिज्म पे इनका बेसिकली he was not very happy with jingoism. Okay, he was against jingoism or mindless nationalism. He said कि आप अपने आप को linked देखो. ओके, आप अपने आप को इंटरट्वाइंड देखो विद द लाइव्स ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड द नेशंस इन ऑर्डर टू बेनिफिट देयर ओन वेलबींग. अपने वेलबींग की तरह, ओके, अपने वेलबींग के लिए आप अपने आप को दूसरे लोगों से देखो. तो यहाँ पर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ ड्रोन स्ट्राइक्स, कि अगर अमेरिकन सिटीजन्स अपने आप को इस एक इराकी, एक अफगानी और एक यमनी सिटीजन के साथ इंटरट्वाइंड देखे या उनसे सिंपथी रखे, तो क्या वो ड्रोन स्ट्राइक्स जो अमेरिका के हैं दैट विल स्टॉप? यस और नो? वेरी गुड, यस, करेक्ट. वॉर भी स्टॉप हो जाएगा अगर हम अपने आप को एज अ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ एवरी ऑफ डिफरेंट सिटीजनशिप, पीपल ऑफ डिफरेंट सिटीजनशिप देखें, तो वॉर कुड बी अवर्टेड. तो ही वाज अगेंस्ट जिंगोइज्म. He had a very dynamic concept of nationalism. Okay, एंड इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे. 1893 में he gave a very great speech. Okay, he gave a excellent speech in Chicago. वहां पर वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था. ओके, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस आई थिंक हुआ था, एंड ही वेंट देयर एंड ही गेव अ वेरी गुड स्पीच. आप उसको आप देख सकते हो, एंड वो यूट्यूब पे प्रेजेंट है. ओके, इट इज नरेटेड. ओके, इट इज नरेटेड बाय सम अदर पर्सन. उनकी वॉइस नहीं है एक्चुअली वो, बट दैट इज अ वेरी impactful speech. Okay,
दैट इज अ ओके, दैट इज एन इशू। आई थिंक वो बाद में हम डिस्कस कर